comfortable in order to like grow within this technical community, right? And so when you have WTM ambassadors that are holding exclusive events for women, when they're holding workshops that help women grow their confidence, so इस type of situation के अंदर you have your WTM ambassadors that are the best example for that. And lastly, जो आज हमारा focus है main, it's about the GDSC chapters. So similar to how GDGs work on आप कह सकते हो city levels, right? इसी तरीके से university chapters के लिए you have GDSC chapters that are doing that same sort of thing. तो एक university chapter level के ऊपर what they're doing is that they're basically going ahead and they're holding technical events. They're holding events that sort of increase technical, non-tech awareness as well, and basically creating this community that आप कह सकते हो it continues on for a long time. For instance, मेरा इस दफा जो chapter है, we have the 5th year going on for the GDSC UET Textile chapter. So GDSC की सबसे मजे की बात ये होती है कि you really just need a couple of people that are really passionate about communities जो कि आगे जाके इतना grow करते हैं और आगे जाके इतना continue करते हैं. And I'll show you examples in this presentation as well कि how you can go ahead and grow with the GDSC chapter with communities as well. तो लेट्स लर्न अ बिट अबाउट GDSC. क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पूरा सिस्टम चलता है. As I've told you, these are community groups for university and college students, जो कि undergraduate, graduate programs में भी हो सकते हैं. That's the one good thing about GDSC chapters is that there isn't any, you could say, आप कह सकते हो boundaries. अगर आप master's student भी हो, you can apply to become a GDSC lead. You can also become a part of a GDSC chapter as well. There aren't really any specific boundaries. The only thing and the only आप कह सकते हो आप their वो एक requirement है वो ये है कि that you have to be a student. And so moving forward, GDSC की journey कैसे चल रही है, what happened. The GDSC, you could say, program started in Pakistan back in 2019, and there were only 43 chapters at that time. And coming up to 2023, अब 81 leads हैं, यानी 81 chapters, 81 universities within Pakistan जिधर ये सारे chapters चल रहे हैं. And between these, you could say 4 years or so, there have been a lot of, you could say, growth for this GDSC program that's been witnessed. COVID का time आया था, उस time भी ना, अच्छा, I like to quote this thing because I myself am someone जिसकी degree start हुई थी during COVID-19, and I'll tell this story a bit elaborately आगे, लेकिन मेरे लिए during that COVID time, the most important thing that really helped me grow during a time जब हम online थे, जब बिल्कुल zero human interaction वाला situation थी, it was GDSC as well. And that's because बाकी दुनिया अपनी जगह रुक गई, GDSC chapters नहीं रुके थे. They were doing a lot of wonderful virtual events such as Bootcamp 101. Bootcamp 101 का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ. They basically had this, आप कह सकते हो 2 or 3 weeks long bootcamp जिसके अंदर every single day they taught about a different type of technology. And every single day you got to learn about these different domains within tech जो कि अच्छी खासी लोगों को उनका आइडिया भी नहीं होता, which is the purpose of GDSC chapters कि आप लोगों को technical awareness आए. And इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि लोगों को एटलीस्ट आइडिया हुआ sitting at their homes कि अच्छा what can we really learn and how we can make the most of this time that we have at home within these technical domains itself. So moving forward, to tell you guys more about the GDSC community, I always like telling my journey because मेरे लिए GDSC program में आना itself was a really big shift from what I originally wanted to do. So I'm going to tell you guys a bit about my first year. This was when I was just a community member. To become a community member, आप एक normal GDSC chapter का एक आप कह सकते हो बेबी का पेज होता है, वो आप लोगों को इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा फॉर इस्लामिक यूनिवर्सिटी. आप वो ज्वाइन करते हो, आपको इवेंट के अपडेट्स आते हैं, आप इवेंट ज्वाइन करते हो, अटेंड करते हो, you're basically like an attendee. तो during my first year in university, मेरा सीन ये था कि I did not plan to start studying software engineering. मेरे बिल्कुल ही कहीं दूर दूर तक मैंने सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग साइड पे आऊंगी. मेरा शौक था आर्ट्स का, लेकिन स्टफ हैपन्स, थिंग्स हैपन, आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें. आई एंडेड अप डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. एंड ऊपर से कोविड का ईयर था, देयर वाजंट मच इंटरेक्शन विद द पीयर्स विद इन माय क्लास एज वेल. तो उस टाइम के ऊपर मेरे लिए एक सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हो, आपको अलिफ बे नहीं पता होती कि आप क्या कर रहे हो. तो अनलेस आपने ICS वगैरह किया हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस रिलेटेड आइडिया होता है. बट अगर आपने नहीं किया होता, यू आर बेसिकली क्लूलेस. आपके इर्द गिर्द लोग फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे होते हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं. आप सबकी शक्लें देख रहे होते हो कि यार मैं किधर फंस गया. तो इस टाइम के अराउंड ना यू ऑलवेज नीड समवन टू मेंटोर यू, राइट. You always need someone जो आपको थोड़ी सी guidance दे. For me, that guiding factor for that year was GDSC. I always like putting up these two pictures, and I'm going to tell you guys why. जो ये साइड पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, this is a screenshot from an event. ये टॉप कॉर्नर के ऊपर मेरे लीड थे for that year. His name was तला सलमान.
The reason why I always loved telling people about Tala Bhai was that I came into a university जहाँ पे environment I would quite clearly state was very misogynistic. पहले दिन पे ही I had seniors telling me कि यार यहाँ पे डिग्री करने का कोई फायदा नहीं है, लड़कियां तो बस एम ही आती हैं डिग्री लेके शादियां वादियां करनी होती हैं, पता नहीं तुम लोग क्यों टाइम जाया करते हैं पढ़ाई के ऊपर. एंड आई हैड कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिधर I've always had dreams and ambitions. I wanted to achieve things in my life. And then hearing those statements was very demotivating in a way. I was like, क्या मजाक है, किधर फंस गई हूँ मैं आके. लेकिन तलब भाई was someone that kind of noticed that spark within me, and then he motivated me a lot. वो मुझे बताया करते थे उसका these are the type of events you should attend, this is the type of domains you should explore. He even motivated me to like become a core team member the next year for GDSC as well. And just because of his guidance and his motivation, I was able to come within this program, right? And that's how a community grows, that's how a community builds, and that's how a community helps. And that's how you get help from a community. उस टाइम दैट पर्सन वाज समवन जिसने मुझे गाइड किया, जिसने मुझे एक मेंटोरिंग, आप कह सकते हो ना, एक मेरे लिए मेंटोर बना. एंड once you go through that entire process, you become a mentor for someone else later on. This second screenshot is from my first day at university. हमारा पहला दिन था 5th of October 2020. And I always love telling, इसको आप लोग ना याद रखना है आगे, it factors in. I'll tell you guys when. So, next year I became a core team member. I was the graphic design lead at my campus, and this was a year that was sort of like a breakthrough year for me. I was someone that was not used to public speaking. Even मुझसे ये वाले अभी अगर कोई 2-3 साल पहले मुझसे कहता ना यार इसका आके प्लीज ऑनलाइन बात करो किसी से, अराउंड लाइक 40 लोग बैठे हुए आके बात करो, मुझसे नहीं कभी बात की जाती. लेकिन this year was a year of growth for me. Reason being so is that again I had a mentor, I had a lead that was really आप कह सकते हो motivating person for me. This is a picture from DevFest 2021 at NAST. And this is my lead with me. Her name is Samia Afzal. Samia Baji मुझे इतनी motivate करती थी कि she gave me all the creative freedom that she could to do whatever I want. मैं graphics and media वगैरह handle करती थी. Like उसका जो तुम्हारा दिल करता है ना तुम करो. And that was a really fun thing for me because I was someone जिसको वैसी arts पसंद थी करनी, तो मैंने arts की degree थी. So this was sort of like an escape for me कि हाँ चलो यार, I'm part of a really fun community, and at the same time I'm doing something that I really enjoy. Secondly, this was the year that I gave my first online session. A session online because असल में कोई मैंने से पहले session दिया नहीं था. This was the year I gave my first session, and that was the basics of graphic design sort of workshop, right? And that workshop was so fun for me because it made me realize कि हाँ, I actually do have a skill, and I actually have the capability कि मैं लोगों को उसके बारे में सिखा सकूं. And that was a point where it clicked for me कि यार, I want to become a lead and I want to do the same thing for other kids as well. I realized कि I was someone that had that potential, लेकिन I didn't really have a platform to sort of, you could say, grow my potential through, right? And I wanted to do that thing for other kids in my university. Because जब से मैं UET आई हूँ ना, there's one thing that I've noticed constantly is that हम लोग की यूनिवर्सिटी में, I don't know if you guys relate or not, I think a lot of people do throughout आप कह सकते हो पाकिस्तान, is that students are really capable and talented, लेकिन they need platforms to grow through. इकबाल का शेर है ना कि मतलब जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी. तो उसका मतलब ही ये है कि जिन लोगों के पास वो पोटेंशियल है, जिन लोगों के पास एक टैलेंट है, उसको नर्चर और ग्रो करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है. तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर किड्स. एंड जब मैंने एज GDSC लीड एप्लीकेशन जब मैंने फिल की दिस ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड बिकम द लीड नेक्स्ट ईयर. दैट वाज माय विजन कि मैंने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है इन माय यूनिवर्सिटी कैंपस कि जो बच्चे करना कुछ चाहते हैं एटलीस्ट वो तो आगे आए. So that is what we did. सबसे the first thing that you do is you create your GDSC core team. इस वक्त I'm not sure किसकी applications खुली हुई for Islamic, लेकिन core team is basically the team that works directly under the lead. And core team के अंदर last year we had different sort of positions: graphics, web development, UI, UX, media, content writing, management. This depends on your lead. वो किस type की मतलब positions लेके आना चाहती हैं. लेकिन at the end of the day, I would tell you one thing कि irrespective of the type of position that you're given, at the end of the day, the type of work that you're doing is going to be the same. आपने events करवाने हैं, you can always go ahead and recommend the type of events that you want to do. You can always go ahead and just tell your lead कि हाँ, this is something that I feel like it's missing on our campus. Why not go do that?
And the best thing about this platform is that you don't really have any boundaries. You can go ahead and do anything. हमने पिछले साल बहुत चीजें कराई, बहुत मजे की चीजें की थी. And a lot of these things were suggestions that I got from my team. And that's the way how you grow a community, right? उसके बाद last year I अच्छा for some people they have seen some of these pictures before तो वो कहेंगे कि क्या यार ये हर जगह सेम चीजें रिपीट करी होती है बंदी लेकिन I always go ahead and show people this is that because it's one of my favorite things that I did last year हम लोगों ने अपनी general team बनाई थी and that general team then we had like a really fun photo shoot and I always look at these pictures and they make me smile because we had a really wonderful day when we had this photo shoot firstly and secondly it was really a first time in the 3 years that I had been studying in UET that I saw students on my campus really be like, हाँ आपकी ये तो बड़ा मजा आया है बड़ी मजे की चीज़ है we're looking forward to this tenure and that's what I really wanted for students कि they look forward they want to do something within this campus right now अब I mentioned that 5th of October 2020 was a really important day for me because उस दिन मेरा first day था university में and that was a day where I'm gonna be very honest with you guys, really hopeless, really matlab, worried about my future क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना. 2 years later, I was holding my first event as like a GDS lead. हमने 22 batch आया था उनके लिए हमने orientation session करवाया था. We had like 70 plus kids in the classroom at that time, and it was a really wonderful session because not only was I able to tell kids कि अच्छा यार this is a program that you can come and join and then you can get that sort of mentorship it was like I was able to see those faces that were kind of worried the way I was 2 years back. लेकिन at the same time I was able to help them out to some capacity. And alhamdulillah इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस दफ़ा भी general members हैं for the GDSC chapter at our campus जो कि और दूसरी societies में भी हैं that are already doing a lot of wonderful things within the technical domains that they are in. And that's a really important thing for me. Because आप जब परेशान होते हो ना तो आपको कुछ समझ नहीं आती कि आप क्या करो. You waste a lot of time in that process. Why not explore something? That is the purpose with through these communities, right? उसके अलावा we had a lot of events. We did a lot of different things. And outside the university campus as well, we did a lot of different things. This is a picture from last year के DevFest. It happened at Air University. इस दफ़ा भी DevFest Air के ऊपर अंदर ही हो रहा है. This is a picture with our faculty advisor, Talha Bhai, Samewaji, and then there's me. So three batches of GDSC leads and then our faculty advisor. And then this is the picture from our GDSC lead summit. वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे बताऊंगी उसके बारे में. तो this year I am a mentor in the GDSC program. Mentor क्या होता है? एक दफ़ा आप lead के program से graduate हो जाते हो ना, you become a mentor. A mentor basically helps the new lead. आप उनको थोड़ा सा idea देते हो कि okay, क्या आगे चीजें लेके आप जा सकते हो किस तरीके से because when you become a lead there are a lot of things that you have to figure out so when you have a mentor with you they basically sort of ease things for you they basically sort of help you understand the gist of things it makes the process a bit more easier right and then uske baad I alhamdulillah had a lot of wonderful opportunities this year that I did not even fathom last year right because last year मेरे लिए the only purpose I had was कि यार मैंने अपना चैप्टर ग्रो करना है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को ग्रो करना है and then this year I was able to extend that knowledge to a lot of other chapters as well and at the GDSC Lead Summit for this year as well which was really it's like an opportunity out of this world right so हमने last year क्या करवाया what was the vision behind these things and how did we go about it we had 30 plus events and around 9,000 plus attendees throughout those events and really great emphasis on female participation because मेरे लिए एक ये बहुत personal point ये है कि I want girls to come forward. You know, the thing about women in technology in Pakistan is that there's this notion कि apparently एक दफ़ा लड़कियों की शादी भी हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने कुछ करना नहीं होता which is very weird thought for me because a lot of us may have mothers who have been working women. We have seen our mothers juggle so many responsibilities throughout our lives. And not just our mothers, it's just women in general, right? Why do you categorize people so quickly and so in like this really tight constrained box for no reason, right? Every single person has a right to follow their dreams, follow their ambitions. It's their right, it's their basic right. So what we can do throughout these communities is कि थोड़ी सी को encouragement दें थोड़े से एक वो प्लेटफॉर्म दें कि एटलीस्ट जो थोड़ी सी हेजिटेशन का फैक्टर खत्म करना होता है ना लड़कियों के अंदर ताकि वो और ग्रो कर सके एंड आई वांट दिस टू बी रियली यू कैड से एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर जो इस वक्त लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं कंसिडरिंग के आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आयशा का जो कैंपस है इट्स लाइक अ गर्ल्स ओनली कैंपस राइट तो एक गर्ल्स ओनली कैंपस के अंदर एक जीडीएससी चैप्टर इटसेल्फ चलाना इज अ रियली आप कह सकते हो
Big feat और एक GDSC चैप्टर को उस वाइज रिकग्निशन देना. एंड अ बिग एग्जांपल कैन बी फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था लास्ट ईयर. Iman Amjad, if you've heard of her name, I would really recommend you guys search her up. Iman is a really wonderful example when I talk about women in technology. Reason being so is that Iman ने ना एक आप कह सकते हो गर्ल्स ओनली कैंपस के अंदर इस तरीके से अपने GDSC चैप्टर को एलिवेट किया, तो दे एंडेड अप हैविंग द मोस्ट आप कह सकते हो सोल्यूशन चैलेंज सबमिशंस थ्रू आउट आई थिंक द एशिया रीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So that was a really big feat for women in technology. Yep, Midhat is from Jinnah University for Women. Last year, Midhat की I think आपकी lead थी Aksa, I remember, and Aksa ने भी I think काफी अच्छे मतलब these are girls I really really commend because these people are fighting a lot of things. It's not just growing a chapter; it's also growing against this bias that's already present. क्या लड़कियां कुछ नहीं कर सकती. And then we ended up having like around 4+ solution challenge submissions. 4+ don't really sound like that big of a number. Like in our chapter only had like one submission for the past 3 years before I came, so it was a big thing for me. And then we had like multiple collaborations and partnerships with a lot of companies, a lot of other GDSC chapters, GDG chapters as well. Data Camp के साथ हमने काम किया, Meta School के साथ हमने काम किया, different GDG chapters including GDG Islamabad, GDG Cloud, GDG Live. So it was a really, you could say, fruitful year for us. So, what are the different types of events that we had, and then how I sort of grew the kids in my campus throughout these events? I always talk about Google Batak. Reason being so is that it's the favorite thing that I did last year. Google Batak was basically this series of speaker sessions we had online. So, and they were like really candid speaker sessions. So what we used to do is that we just used to call in a speaker. We had like a list of questions, लेकिन हम उनको explicitly use इतना खास नहीं करते थे. And we just had a one-on-one conversation regarding sort of like a theme or like you could say any sort of specific domain of their expertise or their career, right? And the reason being so is that through this Google Batik series, we were able to target importance of communities, importance of networking, how to grow yourself in these communities, how to grow with your skills in these communities, how to grow as like women in technology. So these were different sort of areas that we were able to really target throughout the series. Then we had a lot of different boot camps, web development, content writing, Flutter का हम लोग का boot camp था, and multiple other speaker sessions as well. And one thing I did, or one thing I focused on in these events was is that I tried to bring kids in my team forward. Reason being so is that मैं तो already lead बन गई थी. मैंने जो अपने end पे एक achieve करनी थी चीज़ वो मैंने कर ली थी. What was next for me is that I wanted कि अब मेरी यूनिवर्सिटी से बच्चे आए, वो आगे आके वो अपना आप कह सकते हो अपने आप को grow करें. How did we go about that? हमने web development का boot camp करवाया था. We had like 8 modules or so, and every single module was, you could say, hosted or taught by a kid from our our technical team, right? And what that helped really for those kids is that they were able to create a portfolio. Okay, acha yaar, if I know web development, this is a skill that I know. How do I prove this? I am making projects at the same time. I'm making content related to that. आप लोग अगर LinkedIn खोलते होगे तो अच्छे खासे लोग do post a lot of content relating to technical things, technical concepts. This is one way you can showcase that. This is one way you can just put this on your portfolio. आप resume के ऊपर you can make it like a clickable text के वो आपको उस वीडियो की तरफ ले जाए, रिकॉर्डिंग की तरफ ले जाए that we have saved on YouTube कि अच्छा ठीक है, this is something that this person taught, right? Secondly, मैं ये भी करती थी कि when we used to have speaker sessions, I tried कि बच्चे उनको होस्ट करें, ना कि मैं उन्हें खुद होस्ट करूँ. Reason being so is that I wanted those kids to have that आप कह सकते हो connection with the speakers. A lot of them are having good connections with a lot of speakers that we have till now. And reason being so, how that helps is that unki apni profile grow hoti hai. Because already the people that we're inviting are people from my community, जिनकी already मुझसे सलाम दुआ है. मैं उनके event host करूंगी तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चों को आगे जरूर फायदा होगा. And that is what you should always focus on as a community lead, as like a leading member in any sort of community or society. Always try to create good leaders. In my eyes, a good leader is someone who creates more leaders, right? You give and cultivate the sort of potential, you create leadership skills within the other person. That is what a good leader is, in my eyes, right? So, how do you go about within this Google, आप कह सकते हो, जो भी आप लोगों के GDSC चैप्टर होता है, what do you really focus on? One thing that you focus on is Google technologies.
गूगल टेक्नोलॉजीज किस टाइप की हैं? अभी हम लोगों ने जैसे फॉर इंस्टेंस फ्लटर का नाम लिया था, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यू हैव फायरबेस, यू हैव जीसीपी। फायरबेस के अंदर देयर मशीन लर्निंग की साइड के ऊपर भी चीज़ होती हैं, फिर आपके डेटा आप कह सकते हो बेसिस की साइड पे काम होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? लॉट ऑफ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन एक्सप्लोर थ्रू गूगल टेक्नोलॉजीज। एंड ये गूगल टेक्नोलॉजीज के थ्रू यू गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड प्रोग्राम्स विद इन जीडीएससी प्रोग्राम। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कितने लोगों ने एंड्रॉइड सीखो या क्लाउड सीखो का नाम सुना हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, right? So, Android Seco and Cloud Seco are just two programs that every single year GDSC program के अंदर होते हैं. And what they help really do is that usually GCP, for instance, is a paid platform, right? लेकिन जब आप क्लाउड सीको के ऊपर क्विक लैब्स कर रहे होते हो, they have like these sort of small आप कह सकते हो labs होती हैं that you get credits for GCP, which is Google Cloud Platform. आप थोड़ा सा GCP के बारे में सीखते हो, you perform these hands-on tasks, and then that really helps you build your cloud आप कह सकते हो skills. And then उसके बाद if you complete the task, if you complete the test that they give you, then you're able to get some sort of swags as well. Similar to Android Seco का भी यही scene होता है. So Google really has a lot of programs that help you focus on Google technologies, help you learn Google technologies. It really depends on you कि आप कितना leverage करना चाहते हो इन सबको. उसके अलावा there are a lot of Google programs happening throughout Pakistan because Google is seeing the potential that Pakistan has. Google Cloud is investing a lot in Pakistan. Google for startups, they have Google for games, Google App Growth Lab. अभी recently Google App Growth Lab के हुआ था. I think एक पूरा आप कह सकते हो tenure गुजरा था. What happens in the App Growth Lab is that if you have a mobile application that you've developed, they help you sort of scale it, they help you grow it, they help you market it to the right people. These are the type of programs that help you get mentorship directly from Google employees. For instance, अगर आप लोगों में से अच्छा आप लोगों में से किसी ने साद हामिद का नाम सुना, वही हफ्सा मुनव्वर का, I hope so सुना होना चाहिए. Okay, a couple of people have. That's great, right? Saad Hamid was one of the people who actually started Google communities within Pakistan, right? And currently he's a Google employee. So he went from volunteering for Google to working for Google, and he's currently working in Singapore, right? So Saad Hamid's job is basically app growth. App growth is how to help developers create an application that you can market to the right people, how you can scale that application. Scaling का मतलब basically ये होता है कि उसे एक large scale के ऊपर लेकर जाना, and then increasing the profit that you can gain from that and increasing the customer base for the application, the amount of people that are using that, right? So these sort of programs are directly headed from Google employees जो कि आप लोगों को directly mentor करते हैं कि अच्छा ठीक है यार, if you're developing a game, किस तरीके से आपने उस गेम को इस तरीके से डेवलप करना है कि आप उसे मार्केट में बेच सको, आप एप्लीकेशंस किस तरीके से बेच सको, अपने स्टार्टअप को वैल्यू की तरफ कैसे लेके जा सको. So there are a lot of things that Google is doing. For instance, आप लोगों में से काफी ऐसे लोग होंगे that are currently in their final year, but maybe they're approaching their final year, right? आप लोग FYPs की तरफ जा रहे होंगे. Your FYPs can be converted into startups. Google for Startups का program will help you really shape your FYP in a way that is able to become like a scalable product in itself. So there are a lot of things that are happening all over Pakistan. The only thing that you need to focus on is how to first of all look for these opportunities. How do you look for these opportunities? You follow the right people on the right social platforms, and then secondly, take a chance with these opportunities. हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग कोई एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और हम कहते हैं कि यार नहीं, मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता, ये मेरे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग चीज लग रही है. एंड देन at the end of the day, it's really not that intimidating, it's not really that scary. आपको एक डर खत्म करना होता है अपने अंदर, राइट? तो whenever you see any of these opportunities, just go for it. ज्यादा क्या होगा कि रिजेक्शन आ जाएगी ना. रिजेक्शन आप लोग जितना जल्दी जिंदगी में लेना सीखोगे ना, the more you're gonna grow. Okay, so next things is that the GDSC Leads Summit. So this is exclusively just for GDSC Leads. लेकिन I'm gonna tell you because ये बहुत आप कह सकते हो मजे के 3 दिन होते हैं that are so memorable. You're gonna remember this for the rest of your life if you get the chance to become a GDS lead and attend this summit. So basically, every year Google has this thing where they have like a 3-day summit only for GDSC leads. तो आप बेशक पाकिस्तान में जिस कोने से आपका यूनिवर्सिटी के चैप्टर आप जिस कोने में रहते हो, if you're a GDSC lead, you're going to be invited to a city. For instance, last 2 years it's been Lahore. You spend 3 days like networking with the people from your community, and it's not just GDSC leads. It's people who are working in Google. It's people who are working with GDGs, GDEs, WTM ambassadors. So many wonderful people in this one location. And सबसे बड़ी बात ये होती है ना that these people
आप जब उनको ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हो तो आपको लगता है कि यार पता नहीं ये क्या है, मैं तो इनको नहीं अप्रोच कर सकता, मैं इनको अप्रोच नहीं कर सकती। लेकिन when you meet them in real life, you actually learn कि हाँ, these are people that are just like me. They started off just like where I did. And I can also learn and grow into someone just like the way they have grown into people, right? So that's the greatest asset that this summit had. Last year, हम लोग को chance मिला, we got to meet Hafsa Munawar, we got to meet Saad Hamid, we got to meet Shafiqa Iqbal, we got to meet Arslan Arshid, and these are just example of people who started from base level here in Pakistan, and then they went on to do really amazing things. So this is a really good opportunity. So new summit जो होगा वो next year होगा. So if you become a GDSC lead this coming summer, so inshallah you'll be able to attend the summit next year as well. अच्छा, उसके बाद the Google Solution Challenge. अच्छा, I have a question. How many people here are currently in their final year? You're making FYPs, etc. Okay, so we do have a couple of people, right? So Google Solution Challenge is basically this challenge that sort of happens every single year. And what happens within the Google Solution Challenge is that you have the 17 United Nations Sustainable Development Goals. These 17 SDGs are basically sort of these goals that the UN has defined in different sort of categories. So it targets education, it targets environmental consequences, it targets a lot of things, right? And what they want when it comes to these UN K17 SDGs and what they want in the solution challenge is that Google basically wants you to take one of those SDGs. For instance, they say that UN says कि you should work towards quality education. You're gonna take the SDG. You're gonna notice within your community कि हाँ यहाँ पे educational problems किस area के अंदर है. You see कि अच्छा ठीक है, XYZ location near where I live has, you could say, a really less amount of, you could say, आप कह सकते हो education, कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे. So what they want you to do is that you're taking a local problem, a localized problem, and you're going to develop a technical solution for that. कि अच्छा ठीक है, using technology, how do you go about and how do you really, आप कह सकते हो, create a solution that is able to solve that problem, that is able to fulfill that SDG within that area. तो आप लोगों की एफ आई पीज भी ऐसी होती हैं यूजली, अगर आप अपने एफ आई पी एडवाइजर से पूछते हो तो दे आइदर आस्क यू टू क्रिएट एन एफ आई पी दैट इज sort of profitable, जो कि FIP तरफ, सॉरी, जो कि स्टार्टअप तरफ जा सकता है. Is secondly the type of FIP they're asking you to create is that it sort of targets any sort of specific goal, जो कि आप कह सकते हो फंडिंग वगैरह जिसके ऊपर आपको आगे मिल सकती है. तो यूजली दे फॉल विद इन द UN 17 SDGs. तो वन ऑप्शन यू हैव इज दैट आप उस FYP को अपनी गूगल सोल्यूशन चैलेंज के लिए आगे सबमिट कराओ इफ यू थिंक इट्स अ रियली यूनिक आइडिया. And then you have the chance कि if you get into the top 100 you can get mentorship directly from Google employees, GDEs, जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे कि उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हो. And then going ahead you have to, you if you get shortlisted top 10 top 3 तो मतलब तो फिर just the benefits keep on growing for that. तो okay, an emphasis on women in tech, even though मैंने women in technology की अच्छी खासी बात कर ली है, लेकिन I'm gonna tell you guys a bit about one more WTM program that's sort of happening, right? It's called I Am Remarkable. I Am Remarkable की gist क्या है? I talked a lot about the fact that women in Pakistan do not have that confidence to go ahead and talk about their skills. And this is something that I myself suffer from at times. मुझे शायद एक बात पता हो, that's correct, that itself makes a lot of sense, that's perfectly logical. लेकिन if I'm present within, like, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो group of guys, I sometimes myself feel very hesitant to go ahead and talk about that. And that's because there is this, आप कह सकते हो, tendency within Pakistan के आप लोगों के ना एक बॉक्स के अंदर जब बंद किया जाता है तो your confidence itself falls a lot, right? And the I Am Remarkable program goes ahead just to directly combat that. It goes to, आप कह सकते हो, inculcate the sense of confidence within women कि आप उनको realize करवाओ कि यार you have a lot of skills, you have a lot of potential, you have a lot of talent. Learn how to appreciate those skills, learn how to appreciate the work that you've done, learn how to appreciate your achievements. That's very important. And that's the purpose of, you could say, women in technology itself. Because skills वगैरह, they are transferable, you can learn them easily. Then to be able to apply those skills and then be able to confidently tell other people about those skills and then present those skills itself is a task that needs to be emphasized on within Pakistan. Okay, so
बहुत मैंने सुना दिया कि जीडीएससी प्रोग्राम होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मतलब आप कह सकते हो बेनिफिट्स वगैरह उसके एंड ऑल दैट, लेकिन हाउ डू यू पर्सनली मेक द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी बेनिफिट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग दैट्स कॉल्ड योर ब्रांडिंग. Personal branding is basically कि you are able, कोई आपका नाम पढ़ता है ना, तो they should be able to connect you to something quite easily and quite literally, right? तो personal branding itself is quite, आप कह सकते हो, possible through the GDSC program, through communities in general. And now how does that go about? You sort of, एक second, you sort of grow a network. First of all, your network is your net worth. What does that mean? आप लोग जब कम्युनिटीज के अंदर अपना एक नेटवर्क ग्रो करते हो, दैट अलाउज यू टू हैव पीपल दैट यू कैन इंस्टेंटली अप्रोच फॉर एनी इशू दैट यू हैव. अगर एट दिस मोमेंट मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर देखूँ, इफ यू गाइस टेल मी कोई एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में, एनी स्पेसिफिक अदर कम्युनिटी आपको क्या अच्छा, we need to approach a person from there, I may be able to easily tell you a person from these communities, right? And this is my network, and that is a network that you should also have. Reason being so is that if you've noticed, I feel like a lot of final year students इस process से गुजर चुके होंगे कि जब internships वगैरह के लिए apply करते हो ना, तो it's very rare कि simply just on the basis of the work that you've done, yeah, the CV and stuff that you have, उसके ऊपर आप लोगों को internship मिल जाए. At the end of the day, you need some sort of reference, etc., right? And if you have the appropriate skills, एक reference लगाना is not a bad thing. अगर आप उस position के लिए worthy हो. लेकिन how do you actually go ahead and find that sort of reference? You need that appropriate network. So this is one example of many कि why it's very important to have a good network around you. Secondly, make LinkedIn your best friend. A lot of people underestimate the power of LinkedIn when it comes to your personal branding. जब भी आप कोई event, बड़ा event attend करते हो, you have some sort of achievement, you do some sort of thing, go ahead and post about it on LinkedIn. Secondly, go ahead and interact with people on LinkedIn. I've said a lot of big names right now. These are all people that are quite fairly active on LinkedIn. आप इनसे आराम से interact कर सकते हो, इनको आराम से DM कर सकते हो. You can ask them a lot of questions and queries that you have. लेकिन obviously मैसेज करने का भी एक तरीका होता है. अब इस तरीके से तो मैसेज ना किया जाए कि मतलब अस्सलाम वालेकुम लिख दो, देन आप इंतजार करो कि अगला बंदा जवाब दे. Always try to be very concise when it comes to messaging someone on LinkedIn. Assalamu alaikum, how are you? This is my name is this is this. This is the issue that I have. If you have any time, could you help me out? End of story, right? Lekin these are all people that are really approachable on LinkedIn. So create your brand on LinkedIn and create a brand that is able to interact with other people, suggest helpful things to other people, ask important questions from other people, that sort of thing, right? Uske baad, technical skills and communities go hand in hand. This is something that it's really, really आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स कि अगर आपको कोई ना कोई कम्युनिटी का पार्ट तो हो, लेकिन अगर आपको कोई टेक्निकल स्किल साथ नहीं आता ना, तो रियली जो आपकी सारी लिंकिंग के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग और वो सारा नेटवर्क बनाने वाला काम है वो किसी फायदे का नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्किल टू सेल. तो whenever you're part of communities and whenever you're growing within communities, जब भी आप ये सारा काम कर रहे होते हो, please also make sure कि आप अपनी technical learning साथ रखो. Because at the end of the day, when you're going to be needing any sort of job, any sort of internship opportunity, you need to go ahead and tell people कि हाँ ठीक है, अब मुझे network है मेरे पास, मुझे फ्लटर आता है, ठीक है, मैं किसी को जाकर अप्रोच कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, आई नीड अ जॉब एज लाइक आई नीड अ जॉब इन फ्लटर, आई नीड इंटर्नशिप इन फ्लटर, एटलीस्ट मुझे काम तो आता है, हैव द नेटवर्क एंड आई हैव द स्किल्स फॉर दैट. तो always make sure that your technical learning continues साथ साथ. Thirdly, your resume, your portfolio, you can make it shine through these communities. Communities are basically at the end of the day volunteer work, right? And यहाँ पे अच्छे खासे लोग ऐसे होंगे जो कि आप कह सकते हो आगे जाके मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपके मास्टर्स के अंदर जब भी आप अप्लाई कर रहे होगे, यू नीड टू प्रेजेंट वॉलंटियर वर्क एज वेल, कम्युनिटी सर्विस वर्क एज वेल. तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक अ मास्टर इन सी एस या उसी भी कोई आप कह सकते हो स्पेसिफिक डोमेन है टेक्नोलॉजी, अगर आप जाके शो करोगे कि हाँ मैंने वॉलंटियर काम इस डोमेन के अंदर किया हुआ है, मेरा वॉलंटियर काम आप कह सकते हो टेक्निकल डोमेन के अंदर है, एंड इट्स कम्युनिटी सर्विस वर्क एट द सेम टाइम, so that's really gonna आप कह सकते हो hit well with the people that are reading your application, because they are able to understand कि हाँ ठीक है, that person is able to dedicate their volunteer time for something that's very specific to the degree that they're passionate about. So that really sits well with the people that you're going to be applying towards, right? So
That was all from my side regarding the GDSC program, regarding the entire thing. If you have any questions, you can either raise your hands or just drop them down in the chat. And if you need any help from me, any sort of contact, that's my number, my LinkedIn, and my email. You can use those contacts for that. And I think over to Verda. If I think you're the host, right? Yes, I am, and a heartfelt thank you to you, Aska, for sharing your journey. Indeed, I have to say that your passion and dedication towards tech communities and the growth of technology in Pakistan is truly inspiring and motivating. And if we have any questions, can I allow them to ask? Yeah, sure. Yeah, Ah, sure. yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, so you all can ask the questions, right? हेलो। Hello, yes. Hello, yes, yes. Moin. हाँ, अस्का अहमद। यार मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरी अपनी एक कम्युनिटी है ना, तो मैं मतलब खैर है ये हट के क्वेश्चन कर सकता हूँ वैसे? जी। तो इस तरह की मेरी अपनी कम्युनिटी है, मतलब मैं उसका लीड हूँ ना, मतलब मैं उसको लीड करता हूँ। तो मेरे साथ जो टीम मेंबर्स है उसमें कुछ इस तरह के मतलब काम करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के वो मतलब मैं उनको इतना मोटिवेट कर देता हूँ कि मेरा वो हद ही खत्म हो जाता है वो मोटिवेशन का। लेकिन फिर भी वो मतलब वो जो अपनी उनकी मेंटालिटी है, जिस तरह उनका सोच है कि नहीं पेपर्स आ रहे हैं, पेपर्स के लिए काम करेंगे और वही रट्टे का कांसेप्ट है, उसी तरह लगे होते हैं। तो इसका क्या मतलब आप क्या कहना चाहती है कि मतलब ये जो टीम है इनको मोटिवेट कैसे करेंगे कि ये भी इसकी तरफ आ जाए? अच्छा, इसका हमेशा ना एक मैंने तरीका ये सोचा था कि जब भी मैंने अपनी टीम्स बनाई थी ना, आई आस्क्ड देम कि यार आप लोग बताओ आपने कैसे इवेंट्स करवाने हैं। ना कि मैंने ना सिर्फ कहा कि यार हमने इवेंट करवाना है, आप आगे करो। आप उन लोगों से खुद पूछो कि यार आप क्या करवाना चाहते हो? जब उन जी, लोगों के जी। अपने आइडियाज़ होते हैं ना, तो यूजुअली बच्चे वो खुद सबसे पहले ना मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ, ठीक है यार चलो, हमारी अपनी एक आइडिया था, हमारा एक अपना एक इवेंट है, उसके ऊपर थोड़ा-सा वो टाइम इन्वेस्ट करें। तब भी हुँ, ऐसा नहीं होता ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे भी ट्राई करो कि आप उनसे पूछो उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। कई दफ़ा सही जी। बच्चे इस बात पे भी होते हैं कि हमारी हमसे तो पूछा नहीं गया हमारी अवेलेबिलिटी कब है। तो एज़ अ गुड लीडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप अगले से भी पूछो कि अच्छा ठीक है, आप बताओ आप कब अवेलेबल हो? आपके लिए अगर ये टाइम ईज़ी रहता है हम उस वाइज़ मैनेज कर लेते हैं। जब वो सही जी। देखेंगे ना कि आप थोड़े से अकोमोडेटिंग हो रहे हो, आप थोड़े से मतलब हेल्पफुल हो रहे हो, देन वो भी खुद थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर आएँगे, अच्छा चलो ठीक है, ये बंदा हमारे इतने अकोमोडेट कर रहा है, हमें इतनी हेल्प कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा-सा सही तरह उसके लिए टाइम डेडिकेट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो सही है, थैंक यू सो मच। नो सही वरीज़। है। ओके, थैंक यू सो मच। जी सोहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि ना अगर हमने समिट ज्वाइन करना हो तो हम इसका क्या मेथड है? आप बता सकते हैं क्या प्रोसेस है? समिट के लिए बेसिकली आपको एक जीडीएससी लीड बनना पड़ता है। एंड जीडीएससी लीड बनने का प्रोसेस ये है कि इनकी एप्लीकेशंस अराउंड अप्रैल के अंदर खुलती हैं जीडीएससी प्रोग्राम की। आप अप्लाई करते हो लीड के लिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, आप अगर कुछ आपने पहले ना रिटन क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। अगर आप उस पर शॉर्ट लिस्ट होते हो, आपका आगे इंटरव्यू होता है, अगर आप वहाँ से आगे सेलेक्ट होते हो देन आप जीडीएससी लीड बनते हो। एंड अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम्पिटिटिव प्रोसेस होता है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं होता, रियली जस्ट डिपेंड्स। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी है? नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अच्छा, आप लोग मतलब बॉयज़ कैंपस साइड पे हो ना? यस। तो अब आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आप लोगों के 2 अलग ही चैप्टर्स कंसिडर होंगे। अगर वो 2 अलग कैंपसेस हैं, तो आप लोगों को फिर इसका मतलब है कि नया चैप्टर बनेगा। तो आप लोग वो अलग अप्लाई कर सकते हो इफ दैट्स वन थिंग। लेकिन ना वो यस, यही मैं होता है कि कहता आप हूँ कि हमारी जीडीएससी यूनिवर्सिटी में मेरे कैंपस में ना कोई नहीं है जीडीएसटी का लीड। आई थिंक मेन कैंपस इस वक़्त आयशा इस दफ़ा बनी है ना, जितना मेरा आइडिया है। वो फीमेल में ना। हाँ, तो आप हाँ, अच्छा तो तो आप आप अच्छा तो नहीं, आप नेक्स्ट Aska, we कैंपस have a male lead. ओके, थैंक यू। चलो दैट्स परफेक्ट। जी हसन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देयर वर अप्स एंड डाउन्स जिसकी वजह से चैप्टर बिगिन नहीं हो पाया। लेकिन अ, अगर कोई है जो किसी चैप्टर का हिस्सा बनना चाहता है या फिर जीडीजी का एक मेंबर बनना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? अच्छा, अगर आप एक चैप्टर का हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो उसका एक तो ये तरीका होता है कि कुछ चैप्टर्स जो हैं वो एम्बेसडर्स भी रखते हैं, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी से रखते हैं। इफ़ आई रिमेंबर लास्ट ईयर नमल इस्लामाबाद वालों ने किया था
कि उनके नमन रावलपिंडी से एम्बेसडर्स थे, और इस दफ़ा भी कुछ चैप्टर्स ने ये वाली चीज़ की है। तो आप ये कर सकते हो कि इफ़ यू हैव अ GDSC चैप्टर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग, आप उनके लीड को मैसेज करो कि अच्छा मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन मैं आपके चैप्टर की टीम मेंबर बनना चाहता हूँ। हाँ, यस आई रिमेंबर मारू की आई थिंक नवल रावलपिंडी वाली एम्बेसडर थी। तो या तो आप उनके लीड को मैसेज कर सकते हो कि आई वांट टू जॉइन योर चैप्टर, आई वांट टू कंट्रीब्यूट। तो अब वो लीड के ऊपर डिपेंड करता है, देयर इजंट एनी आप कह सकते हो स्पेसिफिक रूल के उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस से बच्चे हो। सेकेंडली, अगर आपने GDGs ज्वाइन करने होते हैं तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप डायरेक्टली GDGs के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं आप उनको एक मैसेज ड्रॉप करो ऑन लिंक्डइन प्रेफरेबली। उनसे पूछो कि मतलब आई वांट टू जॉइन योर चैप्टर एज अ वॉलंटियर, आर देयर एनी अपकमिंग इवेंट्स जिनके ऊपर मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ, दिस इज माई स्किल सेट, ऐसे ये काम कर सकता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो उस टाइप का तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज गुड आइडिया एज वेल। बेसिकली आप जो आराम से ईजिली उनको सोशल के ऊपर अप्रोच कर लो तो वो यूजली रिस्पॉन्ड आपको ईजिली कर देते हैं, वो अकोमोडेट कर देते हैं। अगर एक बंदा नहीं करते तो इट्स बेटर आप किसी और को अप्रोच करो। फॉर इंस्टेंस अगर आप मतलब इस्लामाबाद साइड से आप GDG इस्लामाबाद, GDG क्लाउड इस्लामाबाद वालों को कर सकते हो, आपके पास GDG लाइव भी एक ऑप्शन है, तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास होते हैं। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे। तो यस, इट्स योर इवेंट ऑब्वियसली यस। अच्छा, तो डू यू वांट मी टू लाइक स्पेसिफिकली टेक दिस वन? नहीं, यू वर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन या क्या सीन? एक सेकंड, सॉरी कुड यू रिपीट दैट, क्योंकि ना मेरे ग्लिच आ गया था वो कॉल के अंदर। ओके, तो यूजली एक तो गुड ऑप्शन आपके पास यही होती है जो कि इनके ना ये एंड्रॉइड सीखो, क्लाउड सीखो, इस टाइप की इनकी जो आप कहते हो ना प्रोग्राम्स होते हैं। क्योंकि कुछ इनके प्रोग्राम की टेक्नोलॉजीज पेड होती हैं, वो वैसे आपको इजीली मिलती नहीं है, लेकिन इन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं दैट यू एंड दे हैव वेरी वेल क्यूरेटेड आप कह सकते हो लैब्स वगैरह। तो वो एक सिलेबस इतना इतना अच्छा बनाया हुआ होता है कि आप बहुत